You want to fly? You've got to give up the shit that weighs you down. Toni Morrison, Song of Solomon. This is Mind, Body, Money with Ria, presented by GMAX Studios. माइंड बॉडी मनी विथ मी रिया एक इंग्लिश पॉडकास्ट है जिसमें हम औरतों के मानसिक, शारीरिक और आर्थिक सेहत यानी कि मेंटल, फिजिकल और फाइनेंशियल फिटनेस की बात करते हैं। आपके पास भी अगर कोई सवाल हो आप लिख सकते हैं mindbodymoneypodcast@gmail.com पर। जवाब देंगे हमारे पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स। नमस्कार, मेरा नाम अनिंदिता चैटर्जी है। मैं एक मेंटल हेल्थ काउंसलर हूँ एंड आई एम एन एक्सप्रेसिव आर्ट बेस्ड थेरेपिस्ट। I am the mind part of this podcast. नमस्कार, मेरा नाम अंकिता कालसी है। I am a Pilates movement instructor. I believe in smart and efficient movement. मैं इस पॉडकास्ट की फिजिकल फिटनेस और बॉडी एस्पेक्ट कवर कर रही हूँ। Hi, I'm Ritu Mathur. I'm an ex-banker and an independent financial planner, founder of a company called McGreer Associates Private Limited. I am the money part of this podcast. स्वागतम, खुशामदीद। आज फिर हमारे पास 2 विमेन ऑफ इंटरेस्ट हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट रिया और हमारी जो ये 2 लेडीज़ हैं, एक बिल्कुल मस्त मौला है और एक का टूटा दिल है। बहुत ही अलग स्पेसेस और बहुत ही अलग कॉन्टेक्स्ट से आ रही हैं ये दोनों और बहुत जुदा हैं इनके मसले। बहरहाल शुरू करते हैं। आज फिर हमारे पास एक वुमन ऑफ इंटरेस्ट है हमारी और ये कहती हैं, इन्होंने तो कहा ही है कि मेरा क्वेश्चन सिर्फ ऋतु के लिए है। सो ऋतु, स्टेप अप। हाय। हाय रिया। ये कहती हैं, शी सेज आई एम निहारिका, माय क्वेश्चन इज ओनली फॉर ऋतु। आई एम अर्निंग और मैं बहुत अच्छा कमाती हूँ पिछले 10 साल से। वेल डन। पैंडेमिक के टाइम कोई अगर कहे कि मैं बहुत अच्छा कमाती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। एंड इन फैक्ट शी इज सेइंग द पैंडेमिक डिड नॉट अफेक्ट हर इनकम टू मच। पर मेरे सारे पैसे सेविंग्स अकाउंट में पड़े हुए हैं और बहुत सारा पैसा है। इट्स अ मैसिव अमाउंट। शी इज ऑब्वियसली नॉट शेयर्ड हाउ मच। पर मैंने आज तक कुछ किया नहीं है उसका, क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ। बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर्स कुछ कहते हैं, डैड कुछ कहते हैं, दोस्त कुछ, इंटरनेट कुछ और। इट्स ऑल वेरी कंफ्यूजिंग और मैं बहुत ही खुश हूँ सेविंग्स में अपने सारे पैसे छोड़कर। हर्ज क्या है? शी आस्क्स, व्हाट इज द प्रॉब्लम? सब मेरी जान के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? व्हाई इज एवरीबॉडी आफ्टर माय लाइफ? Actually, Riya, this brings me back to what we were talking about in the first episode. Financial independence is not just about earning the money, but doing something with that money, thinking about what you want to do with that money. So I'm glad actually बहुत सारी ऐसी women होती हैं जो भी रिलेशनशिप मैनेजर बोल रहा है या डैड बोल रहे हैं या दोस्त बोल रहे हैं या भाई बोल रहे हैं, उसके हिसाब से चलती रहती हैं without really understanding what they're doing with their finances. Whereas that is not the ideal. Neither Niharika, this is the ideal. So I think आप जो कह रही हैं कि मैं बहुत खुश हूँ and हर्ज क्या है, I don't know कि आप खुश हैं कि आप इज दिस हैप्पीनेस स्पीकिंग की लेजीनेस की, मतलब बहुत कंफ्यूजन है, रहने दो बस, ठीक है, पढ़ा रहे। आई एम सॉरी इफ आई एम ऑफेंडिंग यू, बट ये आई थिंक दिस रिक्वायर्स एक्शन एंड बहुत खुश हैं और सेविंग्स अकाउंट में पड़ा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। You've been working for so long, so there must be a reasonable amount of savings that you have amassed and which you've said yourself, और वो अकाउंट में पड़ा हुआ है। आई एम श्योर सेविंग्स अकाउंट में अगर आपको नहीं पता है, पता ज़रूर होगा, बट एक बार आपको ये बताना मैं चाहूँगी कि आपके सेविंग्स अकाउंट में जो पैसा पड़ा रहता है, वो कुछ 3% के करीब का इंटरेस्ट उस पे मिलता है, व्हिच मीन्स कि आप जो वो पैसे कमा के वहाँ पे बहुत सारी कड़ी मेहनत करके आप 10 साल से कमा रही हैं, पैसे पड़े हुए हैं, आपने जमा कर लिए हैं, बट जो आपने पैसे कमाए हैं, उन पैसों को आपने इतनी कड़ी मेहनत की है, वो पैसे कमा के बैठे हुए हैं जो, उनको भी थोड़ी-सी कड़ी मेहनत करने दीजिए। वो पैसों को भी आप आगे मेहनत करने दीजिए ताकि आपकी मेहनत और रंग लाएगी। अदरवाइज़
You will only be working and all your life. So like I say that, you run on the treadmill to be at the same place. Your money will not grow, and you will keep having to earn money every year, month after month, to meet your expenses month after month. सो वो जो पैसे आपके पड़े हैं, जो 3% के इंटरेस्ट पे सेविंग्स अकाउंट में जमा हो रहे हैं, अम, वो काफ़ी नहीं होंगे, बिकॉज़ जो महँगाई है, वो 3% पे नहीं ग्रो कर रही है। जो महँगाई है, वो इस हिसाब पे ग्रो कर रही है कि अगर आपका पेट्रोल 2010 में 10 साल पहले 50-55 रुपए का था, तो अभी 1 लीटर पेट्रोल 95 रुपीज़ का है। 1 लीटर दूध अगर आप आई थिंक 26 या 36 रुपीज़ लीटर के हिसाब से अगर 10 साल पहले होता था, तो आज वही 1 लीटर दूध आई थिंक 60 रुपीज़ के आसपास या 55-60 रुपीज़ के आसपास होता है। तो मतलब सब चीज़ों की कीमतें तो डबल हो गई हैं पिछले 10 साल में, और आपका जो पैसा है, जो आपने कमाया हुआ है, वो 3% पे ग्रो कर रहा है, फार फ्रॉम बीइंग डबल। तो अगर आपका पैसा वो 3% के हिसाब से खाली ग्रो करता रहा, तो आपको और मेहनत हमेशा करती रहनी पड़ेगा। You will have to earn better and better and better and work harder and earn better to make those expenses. That's a great perspective, because I'm from the creative side of things, तो मुझे भी इतना समझ नहीं आता, और मतलब तुम्हारी और मेरी तो पता नहीं कितनी बातें हो चुकी हैं कि सेविंग्स में इतना क्यों पड़ा है या जो भी। बट व्हेन यू वर डिस्क्राइबिंग व्हाट यू वर डिस्क्राइबिंग, आई वाज गेटिंग द विजुअल ऑफ अ रेस ट्रैक, कि जिंदगी भाग रही है और पीछे पैसे भाग रहे हैं। दैट इज नेवर अ हैप्पी सिचुएशन वेयर योर मनी इज रनिंग बिहाइंड योर लाइफ टू कैच अप। एब्सोल्युटली। तो सेविंग्स अकाउंट में अगर आपके पैसे पड़े हुए हैं, तो वो 3% पे भाग रहे हैं, मतलब बहुत ही मध्यम गति पे चल रहे हैं, और आपके जो खर्चे हैं महंगाई उसेन बोल्ट है। मतलब वो आपका रोज न्यूज़पेपर का हेडलाइन है कि पेट्रोल सबसे ज्यादा महंगा, आज जी। उससे भी ज्यादा महंगा, कल से भी ज्यादा महंगा, मतलब सो वो जो मध्यम गति और तेज गति वाला, मतलब वो मिलना नहीं हो पाएगा। जी। Money work as hard. I love that thing you said, that you are working hard, but why don't you make your money work hard? Money is not a static thing. Also, I think she's not talked about this here, but and right now she's in a happy space, so her pandemic did not affect her income. Nothing happened in the last 10 years. She's been earning, so she's probably a young girl who's at her prime career and everything. So probably maybe कई बार ना ये होता है कि at this time of our lives हमारे जहन में भी नहीं आता है कि हम रिटायर करेंगे at some time. So what then? क्योंकि अभी तो आप कमा रही हैं, आप खा रही हैं। अगर आप यही करती रहीं, और आपका जो 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 मनी जो मध्यम गति से जो चल रहा है ना, तो अगर आप यही करती रहीं, तो फिर जब आप कमाएँगी नहीं, once you retire, how will you make ends meet at that point in time? So just to give you a little perspective, this may be numbers, and I don't know if the listeners will have the patience for it. No, I think it's important. अगर आपको सपोज आज आप पैसा कमाना बंद कर देते हो, और सपोज आपकी आज के तारीख में 1 लाख रुपए मंथली एक्सपेंडिचर है, जो भी, मतलब घर का किराया, या जो भी एक्सपेंडिचर है 1 लाख रुपए के करीब है। आपको यही लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए, अगर आप चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि हम यही लाइफस्टाइल मेंटेन करें। हमारे ऐसा नहीं है कि कल मैं जब रिटायर हो गए तो मैं बिल्कुल अपना लाइफस्टाइल कम कर दूं, और मैं जो आज एग्जॉटिक 2 बार रेस्टोरेंट में जाना चाहती हूँ महीने के, वो मैं नहीं जा पाऊँ, और जोड़ के ऐसे स्पेंड करूँ। आई एम श्योर nobody wants that after earning and you're living for some time. Yeah, and once you've lived it up, it's very difficult to live it down after that. Absolutely. So if you today require 1 lakh of rupees to sustain your lifestyle, after 10 years, this lakh of rupees at this current price rise जो भी हो रहा है अभी, at a normal average price rise जो हमने पिछले 30-40 सालों में देखा हो, at that average price rise, you will probably require double of that in 10 years time, and 4 times that in 20 years time. So that's the amount. So it really, अगर आप आज रिटायर करती हैं निहारिका, या मतलब जब भी रिटायर करती हैं, और आपको 1 लाख रुपए चाहिए, 30 साल के बाद ये 8 लाख के करीब होगा, जो आपको मंथली चाहिए होगा। तो वो सेविंग्स अकाउंट में रह के तो वो ऑर्गेनिकली मध्यम गति पे तो ग्रो करके नहीं होगा। सो आई थिंक व्हाट यू शुड डू। मुझे पता नहीं निहारिका को कैसा लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है तुम्हारी बात सुनकर। No, so this is actually a happy problem, Niharika, that you have the money saved up.
So saving is not the same thing as investment. You are earning, you have saved the money, it's lying in the savings account, and savings account उसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो सेव करके रखा है. आप जब तक उसको इन्वेस्ट नहीं करेंगी तब तक वो ऑप्टिमल आपको रिटर्न नहीं दे सकेगा कि वो उस हिसाब से ग्रो करे जिस हिसाब से आपकी ज़रूरतें ग्रो करेंगी, जिस हिसाब से आपके एक्सपेंडिचर ग्रो करेगा, उस हिसाब से आपका ये सेविंग ग्रो नहीं करेगा. So what you need to do is you need to invest. Sure, there must be a lot of confusion because a lot of people are saying things. She's talked about the bank relationship manager. Actually, that was going to bring me to my next question for Niharika before we wrap her question up. I think you've given a very clear and a slightly scary scenario where she must definitely do something beyond saving. But yeah, that brings me to the next thing कि वो कहाँ से और किसकी बात माने जब इतने 36 लोग इतने सारे मशवरे दे रहे हैं तो. I think मशवरे बहुत सारे होते हैं, पर थोड़ा सा अपने आप को भी अगर अवेयर कर लें. आज की तारीख में तो एक्चुअली आप अगर जाके कुछ गूगल भी करें अबाउट इन्वेस्टमेंट्स. फर्स्ट, इफ यू कैन फाइंड अ फाइनेंशियल प्लानर हु कैन, like a doctor who can advise you, great if you can do that. That would be ideal if you can. Otherwise, आप rudimentary financial plan टाइप की चीजें आप अगर गूगल भी करें तो आपको मिल जाएगा कि आप किस तरीके से थोड़ा सा प्लान अपना बना सकते हैं. और थोड़ा सा you have to just spend maybe a little bit of time, a couple of hours if you can invest in reading up a little about investments. It'll empower you to have this conversation with probably the same bank manager, the same father, the same dost and everything else. Right, You'll feel better and not as confused. And that could be a starting point for you. Thanks so much, Ritu. We have one other woman of interest for this episode, but her issues are fundamentally physical and mental, not financial. So I will lean on Ankita and Anindita for that. But thanks so much, Ritu. This was really great perspective. Anindita, we have a very, very sensitive message from someone who's clearly in a lot of pain. And I think her issue is something that आप और अंकिता उससे बात करके अगर कुछ राहत उन्हें मिले, कुछ डायरेक्शन अंधेरे में मिले, मेरा तो दिल बैठ गया था उनका खत पढ़कर. मैं जरा बताती हूँ. ये कहती हैं, I'm a 29-year-old woman. मैं नाम और शहर नहीं बताना चाहती. मैं बहुत एक्टिव हुआ करती थी, प्रोडक्टिव हुआ करती थी. इनफैक्ट माय फ्रेंड्स कॉल्ड मी द एनर्जाइजर बनी. I had time and enthu for everything. But some years ago, I fell madly in love with a married man. I know it was wrong, but I couldn't help myself. वो रिलेशनशिप तो खत्म हो गया, अब 8 महीने हो चुके हैं. पर मुझे लगता है मेरी जिंदगी में पॉज बटन लग गया है. I can't move on. I can't do anything. I don't enjoy anything. I barely manage to do my job. I've given up on socializing, on the gym, और इवन ड्रेसिंग अप एंड लुकिंग डिसेंट. मुझे सजना वजना बहुत अच्छा लगता था, पर अब जरूरत भी नहीं है और इच्छा भी नहीं. हमेशा लिथार्जिक लगता है, रोना आता है. एंड दैट्स इट. Her message is ended there. She's not asked any question. हार्ट ब्रेक एक बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज है मुझे लगता है, क्योंकि जब हमारे साथ वो हार्ट ब्रेक हो रहा होता है एक तो हमें समझ नहीं आता व्हाट हिट अस. फॉर मोस्ट ऑफ अस हार्ट ब्रेक इज प्रीटी मच अनप्रिडिक्टेबल. कोई सोच के किसी रिलेशनशिप में नहीं जाता कि आगे जाके धोखा खाएंगे या कोई हमें छोड़ देगा. तो एक तरह से हार्ट ब्रेक brings out a lot of emotions: anger, guilt, helplessness, desperation, sadness, डिजेक्शन. तो ये सारे तमाम इमोशंस और बहुत सारे ऐसे इमोशंस होते हैं जिनका शायद हम नाम भी नहीं जानते. हम क्या फील कर रहे हैं वो हम बयान नहीं कर पाते हैं. पर अंडरलाइनिंग ऑल ऑफ दिस इज अ सेंस ऑफ रिजेक्शन, अ सेंस ऑफ लॉस. और ये जो सेंस ऑफ रिजेक्शन और सेंस ऑफ लॉस है, ये हार्ट ब्रेक का शायद सबसे प्राइमरी बट सबसे अनरियलाइज्ड पार्ट ऑफ हार्ट ब्रेक है. Yeah, I agree with you, Anindita. Heartbreak can be terrible. And somebody had described it very powerfully to me once, saying it is like grieving. That loss is like grieving. And
It sounds like it's like that for our woman of interest. She seems to be almost Yeah. in mourning. I mean, honestly, there are all these stages, right? Denial, anger, bargaining, low moods. Absolutely, a depressive phase still about to come around and accept कि जो हुआ है या जो हालात हैं अभी के. And I can literally sense a loss through the message. And heartbreak, I guess heartbreak per se, we have all gone through. So it's a feeling that is not unknown to any of us, I guess. It's going to sound banal probably to her when I say it, but you got to pick up the pieces. And I always say this, that you got to turn the love inwards. Now it sounds very lofty and it sounds very like हाँ कहना आसान है, and हाँ शायद कहना आसान है. I don't have a band-aid for her broken heart. I don't have an emotional band-aid. But I know for a fact that a little bit of leaning in, reaching out to friends, making that first trip to a coffee shop to meet a friend, small little things that gives her comfort and safety, which means probably for some people, home means safety, which means going to parents means safety. For some people, a certain friend stands for safety. So I think those little things, picking up a hobby on the side, being a bit altruistic and, volunteering time, all of that can help in some way move the pain. So will the pain go away? Is there an expiry date to the pain? No. But is there a way to manage ourselves? I guess yes. As I said, um, I always believe that doing something for someone else is a great healing aspect of our life. So thoda kuch, some people are very fond of dogs, so working in a dog shelter. Some people are very fond of working with small children. Whatever. So a little bit of altruistic, that kind of charity. और पता है NGO what के साथ. struck me, Anindita, is she says how productive and enthusiastic about life she used to be. She said her friends described her like the Energizer Bunny. तो यानी वो है उसमें कहीं अब दब गया है डेब्री के नीचे. पर वो फितरत है उसकी अंदरूनी फितरत तो यही है कि she goes out and seizes life. Yeah, some relationships, Ria, take away the best of us and move away, unfortunately. But they can't take the whole of us, but they take a very good part of us. But we still have that part, and I think there is some way to nourish that part and to nourish the emotional and the physical part. I think small little efforts of eating right. When I say if she was the Energizer Bunny and we have those group of friends, right? Those extroverts who are the party ki jaan, right? So the first coffee with that friend, with some friend, not a whole group, but a little bit. I think a little bit of, and that Ankita can speak better, but I bet it is very difficult for her to get up and go to the gym, but can a walk help? Yes, why not? Will the watering of the plants help? Yes, why not? I also think old friends are great resources. और हम ना ये स्कूल कॉलेज के फ्रेंड्स को पीछे छोड़ते चलते हैं बट दे न्यू अस व्हेन वी वर नथिंग्स एंड आई थिंक और जो कंफर्ट उनके पास मिलती है वो कहीं और नहीं मिलती. या also it might sound a little funny but blocking this gentleman from all kinds of social media is a good way because what happens is what happens is that we want to watch them. We हम want to कुरेदते see हैं, them. हम उस जख्म को कुरेदते रहते हैं और हम जाते हैं और देखते हैं और पहले तो शायद ब्रेकअप के बाद उस इंसान का चेहरा भी नहीं देखते थे 10 साल, अब तो हर जगह वो इंसान होता है, which surely doesn't help. Yeah, because I understand he's a married man. He probably has a full life away from her, and watching all of it is not going to contribute to her well-being. Absolutely. So no matter how hard it is, and it's going to be tough, but blocking because social media, WhatsApp, पता है कितने तो एक तो इतने channels हैं Exactly. right? और Like, वो हर जगह उसका चेहरा, उसके अपडेट, उसका स्टेटस, उसका कुछ that must be driving her bananas.
Yeah, so I think in some way blocking, because if she doesn't block in the virtual world, she will not be able to block him from her real world. कुछ उम्मीद जागती रहेगी, कुछ कुछ होता रहेगा अंदर. And I think kind of concentrating and focusing on work, whatever she does. I mean, of course, I'm presuming she is a working woman. Um, in a way, to put all her focus in work is one way to get some relief, because that is somewhere you're going to definitely get some gratification. It's going to yield next year in form of a promotion, bonus, all of which helps to gratify. I'm not saying that it is a fix for a heartbreak or pain, but it is definitely a way to give yourself some love. Right. Right, absolutely. Yeah, I feel, what you said, that some relationships take the best of you, and it seems इनकी जो energy थी, इनका जो joie de vivre था, जो enthu for life था, वो थोड़ा दब गया है. But like you said, starting small, थोड़ा बहुत कुछ धीरे धीरे, and the physical aspect of it, the dopamine rush, the adrenaline rush cannot be emphasized more in a situation like this. So I will quickly segue to Ankita, क्योंकि I think the physical aspect of it is critical for mental well-being. ऐसे समय में आप जितना lethargy को give in करते हो और जितना आप उसमें ढह जाते हो, उतना the mental, the hormones, everything they just spiral out of control. So Ankita, what would you say to our friend here who's clearly in a lot of difficulty? I think this case is a little, it is quite sad. And I really feel for her here. But I also feel quite hopeful to help her in this situation, because honestly, I think she just needs an absolute break, an absolute pick her up from this place, take her somewhere out. And for that, I'm going to advise and suggest to do things outdoors. Move out in nature, move out somewhere it's wild, a little more free, away from her regular chores and routine area, maybe city life, her regular gym jana, socializing karna. वो सब तो वो कह रही हैं, सब बंद ही कर दिया है उन्होंने. क्योंकि वो होता ही नहीं. और वो अगर किसी ने कभी फोन किया, वो करना नहीं चाहती, मन नहीं करता. And a bad breakup from a complex relationship, we think it's just about feeling sad and crying like we've seen in the movies, but it has such a holistic impact on the body, on health, on gut, on everything. Absolutely, on your self-esteem, the way you look at your body, the way you feel about your body. It's a crash. Yeah. So again, moving out, there are a lot of people who have been taking up outdoor activities like trekking. I think it's beautiful. Find a nice spot, find a small group, find a little, maybe a partner, maybe just go alone. It's quite safe to go trekking in quite a lot of places. Maybe even taking something up like surfing. I know it sounds quite doesn't sound very conventional as an advice or as a suggestion, but I do think it's worth it to take it up, especially क्योंकि उनकी life के बारे में जानने के बाद हमें ये भी पता है that she has done things for herself before. ऐसा नहीं है कि वो पहली बार कर रही है. So maybe picking a sport that is a little more out of her general area of doing things may actually lighten up this spirit of this sport ability, this little competitive or sort of athletic sense of self in her again. और एक नया चैलेंज कैन बी क्वाइट इनविगरेटिंग, जब पुरानी चीजें करते रहोगे तो पुरानी बातें याद आती रहेंगी. Exactly. कुछ ऐसा करोगे जिसके साथ उस रिश्ते का, उस आदमी का, अपने पास्ट का कोई एसोसिएशन ही नहीं है. एग्जैक्टली. और अगर जब आप जहाँ बाहर जाते हो, अपनी सिटी के बाहर जाते हो, स्पेशली डॉक्टर्स और कॉन्स्टेंटली एडवाइज की पेशेंट्स हु आर नॉट वेल कि बाहर जाओ, गो फॉर अ हॉलिडे, खुली हवा में जाओ, फ्रेश एयर में जाओ.
it changes your perspective, it changes everything for your body. It's a new approach. राइट और आप सर्फिंग या हाइकिंग या इस टाइप का थोड़ा सा चैलेंजिंग आई थिंक इसलिए भी बोल रही हूँ अंकिता कि एक शेकअप की जरूरत है व्हाट यू सेड इन द बिगिनिंग दैट you know it's a rut that she's in and something needs to shake her out of it, right? Yes, absolutely, absolutely. So is trekking alone safe for women in India? Absolutely. I think it is. Yeah. In fact, you can go up in the north. There are lots of places we don't really know where she's from. But there are a lot of places that are very safe for women. There can also be smaller groups that she can be a part of that could be safer if she didn't want to go alone. That is possible. Is all this information is easily available online? Like if Very I easily search... available online. Very easily available online. There, it's also very easily available on a lot of social media platforms. You get quite a lot of reviews. You can review a certain group. You can try and connect with people who have done these kind of maybe tours before. Yeah, talk to them. So safety wise, I think काफी information available है. जी. It's just a matter of that little extra कुछ अलग करने वाली बात. अपने लिए उनको कुछ अलग करना चाहिए. I remember a colleague who in her attempt to get over I think a similar situation of a breakup or something took to diving. And today she's a diving instructor in the Andamans. Yeah. She said it is so addictive that वो करने लग गई तो she just couldn't stop. Exactly. And आप imagine करो मैं इतने सारे लोगों को जानती हूँ, आप भी जानते होंगे, who are in the rut of their city life, who may probably have never imagined कि हम कहाँ से कहाँ जाएंगे. I know women who are 57 years old who are running marathons after lockdowns, who have never done anything really physically challenging or this far in their youth also. And they're doing it when they're this old. So शुरुआत करने की बहुत ज़रूरत है यहाँ पे. But to make this little change, I think might just help her find herself again. That's the reason why the outdoors would do good. Yes. And mastering that will always add to your sense of self, right? That self-esteem which is shattered just when you're standing on top of a mountain that you've just climbed. It's a great feeling. It's a fantastic feeling. So that brings us to a close of yet another episode of Mind, Body, Money with me, Ria, and my experts, Anindita, Ankita और रितु. और आपका फीडबैक, आपके सारे सुझाव, आपके कमेंट्स, आपका अप्रिसिएशन सब पहुंच रहा है हमारी तरफ. हम सबको इंडिविजुअली जवाब दे रहे हैं. डीएम का जवाब डीएम में और ट्वीट का जवाब ट्वीट में. इसीलिए यहाँ सारे नाम मैं नहीं दोहरा पाऊंगी क्योंकि हर जगह बिखरे हुए हैं ये सारे सुनने वाले. ईमेल आईडी आपको पता है. अगर आपके पास कोई क्वेरी हो तो mindbodymoneypodcast@gmail.com. इफ़ यू वांट टू रिमेन अनोनिमस प्लीज़ जस्ट इंडिकेट दैट और हम आपका नाम नहीं पढ़ेंगे. और निहारिका, उम्मीद है कि ऋतु की बात से आप सोचने बैठ गई होंगी. मैं तो बैठ गई हूँ सोचने. बहुत मजबूर कर दिया है ऋतु ने, थोड़ा डरा भी दिया है. और जिस the mathematical precision with which she explained how our money grows as compared to how inflation grows, that was a scary reality check. सबको सुनना चाहिए. निहारिका, अगर आपको कोई follow up questions हैं, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, ज़रूर दोबारा हमें लिखिएगा. And the lady with the broken heart who chose to remain nameless, मैं बयां भी नहीं कर सकती मैं कितना हेल्पलेस फील कर रही थी आपका मैसेज पढ़कर. और हम सब, मैं जानती हूँ हम थोड़ा फ्लाउंडर किए हैं क्योंकि ये इस तरीके का गम है, इस तरीके का दर्द है जिस पे मरहम करने से भी झिझक होती है. और चाहे वो अंकिता हो, चाहे वो अनिंदिता हो, या चाहे वो मैं हूँ, जो हमने थोड़ा सा आपका हाथ थामने की कोशिश की. बहुत बड़ा पहाड़ है आपके सामने और धीरे धीरे ही चढ़ना है और उस तरफ उतरना है. बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं आपके लिए. प्लीज वैल्यू योर माइंड, बॉडी एंड मनी.
That was Mind, Body, Money with Ria, presented by GMAX Studios. This podcast was produced by RM Word Pictures. Audio design, Indranil Bhattacharjee.